डिस मैं आपको ये डिस्कस कर रहा था आपके साथ, कंट्रीब्यूशन मार्जिन के हवाले से डिस्कशन कर रहा था कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो हमारी अच्छा अच्छा, कॉफी प्लेनेट में आपने आपके पास एवरेज सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है, ठीक है। आपके पास सेलिंग प्राइस भी है, वेरिएबल एक्सपेंस प्राइस भी है, फिक्स एक्सपेंस भी है, तीनों आपके पास गिवन है, और टोटल नंबर ऑफ कप्स भी गिवन है, ठीक है, जो ईच मंथ वो करते हैं। तो आपने बताना है कि इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो क्या है। शाबाश, कैलकुलेट करें, मुझे जल्दी से बताएं। ऑप्शन आपके पास यहाँ पर गिवन है। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। अच्छा, तो कैलकुलेट करके बताएं कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो क्या होगा। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो क्या है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइड बाय टोटल सेल। कर लिया तो मेरे साथ शेयर कर लें। सर पार्ट बी होगा इसका आंसर। कौन सा पार्ट होगा? बी पार्ट सर, बी पार्ट। इसने कहा ये यस सर, भी पार्ट 0.758 है सर। 0.758। शाबाश, वेल डन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन, यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइड बाय यूनिट सेलिंग प्राइस। तो ये आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है यूनिट में, जो हमने टोटल कॉस्ट हमें गिवन थी ना, टोटल सेल, टोटल वेरिएबल एक्सपेंस, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन, तो उसके साथ हमने वेरिएबल भी कैलकुलेट कर दिया था। तो इस वक्त हमें यूनिट गिवन थे, हमने उनका दोनों का डिफरेंस किया। ये ऊपर हमें गिवन है 1.949, इसको माइनस किया वेरिएबल से 0.36, तो जो वैल्यू आई तो हमने उसको डिवाइड कर दिया सेलिंग प्राइस 1.49 के साथ, तो हमारे पास ये सेकंड ऑप्शन आ गया। तो वेल डन, वेरी वेल, शाबाश, बहुत अच्छा रिस्पांस दिया आपने। क्विक रिस्पांस दिया करें। तो सर अब आगे आ जाते हैं, हमारे जो लास्ट डिस्कशन है वो है ब्रेक इवन पॉइंट पर। ब्रेक इवन पॉइंट हम दो पॉइंट्स, दो इसी तरह जैसा भी हमने डिस्कस किया था ना, यूनिट सेल में और डॉलर सेल्स में, दोनों में हमने देखना, सेल्स डॉलर्स में और यूनिट्स में, यानी यूनिट्स में भी चेक करना है, अमाउंट में भी चेक करना है। जब हम यूनिट को फिक्स कर देते हैं तो हमारे पास अमाउंट आ जाती है, जब हम अमाउंट को फिक्स कर देते हैं तो हमारे पास यूनिट कॉस्ट आ जाती है। तो अभी हमने इसको चेक करना है ब्रेक इवन को यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ब्रेक इवन इन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस। अच्छा, ये जो ब्रेक इवन का कॉन्सेप्ट है ना, ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में भी है, जैसा मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना, तो इस तरह इकोनॉमिक्स का भी है। आपने वो मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स? नो सर। हाँ सर। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स प्रोबेबली में भी आप मास्टर डिग्री जब करें आगे फर्दर इंशाल्लाह, तो उसमें आप पढ़ें, या एमएस में होगा, ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी एक सब्जेक्ट है। तो ये इकोनॉमिक्स का भी है, बिजनेस का भी है, अकाउंटिंग का भी है। रेफर टू द पॉइंट एट विच कॉस्ट, टोटल कॉस्ट या टोटल एक्सपेंस इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, जब हमारा प्रॉफिट जीरो हो जाए, जिसको हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में कहते हैं नो प्रॉफिट नो नो गेन नो लॉस। ये वो पॉइंट है
जिसमें नो गेन नो लॉस। तो अ ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस इज यूज्ड टू डिटरमिन द नंबर ऑफ यूनिट और डॉलर्स। अब हम इसमें क्योंकि हम मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो हम यूनिट्स को भी देख रहे हैं। वहां पर अभी जो मैंने स्टेटमेंट थी नो गेन नो लॉस, तो उसमें हम अमाउंट को पॉइंट ऑफ व्यू में लेते हैं। यहाँ पर हम यूनिट्स भी देख रहे हैं, तो यूनिट्स एंड डॉलर्स या डॉलर्स और डॉलर्स ऑफ रेवेन्यू नीडेड टू कवर इस टोटल कॉस्ट, यानी कॉस्ट में हमारे पास फिक्स और वेरिएबल है। जबकि हम अगर नॉर्मल डिस्कशन में कहें तो हम वहां पर फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट नहीं लेते, हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को लेते थे या हमारी कॉस्ट ऑफ सेल लेते थे, हम ये नहीं लेते थे। लेकिन हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कॉस्ट के बिहेवियर को अंडर कंसिडरेशन लेते हैं और सबसे ज्यादा हम देखते हैं वेरिएबल कॉस्ट को, क्योंकि वो वेरिएट करती है, जितनी ज्यादा प्रोडक्ट बनती है उसके साथ उसकी कॉस्ट भी बढ़ती है, तो हम उसको मद्देनजर रखते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस कैन बी अप्रोच इन टू वेज, दो तरीकेकार हैं, बहुत आसान है। जिसमें भी हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन में देखा था, एक कंट्रीब्यूशन मार्जिन है जो अभी हमने रिसेंटली डिस्कशन की, और एक ब्रेक इवन की इक्वेशन है, वो रिग्रेशन इक्वेशन है या लीनियर इक्वेशन है, वो उसके मदद से हम करते हैं। वो क्या है, वो भी एक सिंपल इक्वेशन है जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूँ। प्रॉफिट, हमें पता है कि हम प्रॉफिट हमारा क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स माइनस एक्सपेंस, टोटल सेल माइनस टोटल एक्सपेंस। तो हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन में क्या कहते थे कि प्रॉफिट इज इक्वल टू या नेट इनकम इज इक्वल टू सेल माइनस वेरिएबल एक्सपेंस, कंट्रीब्यूशन मार्जिन माइनस फिक्स एक्सपेंस, तो नेट प्रॉफिट आता था। ठीक, तो हमारे पास ये डिस्कशन। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें गौर से, तो इसमें आपके पास सेल्स में से माइनस हो रहा है वेरिएबल एक्सपेंस भी और फिक्स भी माइनस हो रहा है, ये एक इनडायरेक्ट तौर पर दोनों इसमें से माइनस हो रहे हैं। तो हम अगर प्रॉफिट को इस तरफ लेकर आए, दूसरी साइड पर लाएं और सेल्स को इक्वेशन की दूसरी साइड पर ले जाएं, तो उसमें हमारे पास या इसको इस तरह कहें मैथमेटिक्स में कि हम जिस तरह कहते थे कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस वेरिएबल एक्सपेंस माइनस फिक्स एक्सपेंस, तो ये दोनों माइनस साइन वाले हम इक्वेशन की दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे। एड फिक्स एक्सपेंस एंड वेरिएबल एक्सपेंस ऑन बोथ साइड, तो यहाँ इस साइड से जो राइट साइड है इससे वेरिएबल एक्सपेंस और फिक्स एक्सपेंस कैंसिल होकर वो दूसरी साइड पर चले जाएंगे जब हम इक्वेशन को ट्रांसफर करते हैं। तो हमारा ये ब्रेक इवन एनालिसिस में इक्वेशन फॉर्म में ये कह रहा है कि हमारा जब ये प्रॉफिट जो है हमारा जीरो होगा, तो इसका मतलब है कि हमारा जब सेल्स इक्वल टू वेरिएबल एंड प्लस फिक्स एक्सपेंस के बराबर हो जाएगा तो हमारा ये ब्रेक इवन कहलाएगा, जो कि हमने अभी क्वेश्चन में प्रैक्टिस भी किया। ये एक हमारे सामने वही एग्जांपल आ गई जो हमने उस वक्त डिस्कशन में की थी, और इसमें हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट भी की थी, अगर आपको याद हो 40% हमने कैलकुलेट की थी कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। तो अब हम इक्वेशन मेथड में अब देखते हैं, क्वांटिटी को चेक करते हैं कि Q रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ बाइक्स सोल्ड, कितनी नंबर ऑफ बाइक्स हैं। अगर हमारी बाइक्स हैं जो 500 सेल होंगी और अगर उनकी वेरिएबल यूनिट कॉस्ट जो है, सेलिंग प्राइस जो है पर यूनिट वो $500 है और उसकी वेरिएबल एक्सपेंस पर यूनिट जो हमारी $300 है, तो हमारी जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो गिवन है वो $80,000 है। तो अब हमने इस क्यू की वैल्यू को डिटरमिन करना है। हमने प्रॉफिट मार्जिन को जीरो रखा इस फॉर्मूले के तहत जो हमने डिस्कशन की, तो वही होगा जो मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर रहा था कि इसमें आप देखें 500 क्यू क्वांटिटी एंड 300 क्यू, ये दोनों सिमिलर यूनिट्स हैं, तो क्यू को हम वन साइड पे ले जाएंगे यानी 500 माइनस 300 और दूसरी साइड पर 80,000 ही रहेगा, जो हमने एक्सेल में अभी एग्जांपल को भी प्रैक्टिस किया था। तो देखें ये 500 और 300 का डिफरेंस आया 200 क्यू, तो 200 को हम डिवाइड करें बोथ साइड तो हमारे पास 400 बाइक्स हैं। यानी यही 400 बाइक्स जो हम उस वक्त कैलकुलेट कर रहे थे इनकम स्टेटमेंट कंट्रीब्यूशन इनकम स्टेटमेंट में, और हमने एक एक्सेल में शीट बनाई थी और 3 हिस्सों में आपको मैंने कहा था आप उसको करें, तो आपने वो कहा कि अगर हम 300 करेंगे तो हम लॉस में होंगे, अगर हम 400 करेंगे तो नो गेन नो लॉस होगा, ब्रेक इवन पॉइंट होगा, अगर हम 500 करेंगे तो हमारी प्रॉफिट मार्जिन 20,000 होगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर ये एग्जांपल थी, ये वो केस था जिसकी इक्वेशन थी जिसको हमने कंसिडर किया था और हम कैलकुलेट करें, इसको हम कहते हैं ब्रेक इवन इक्वेशन कहलाती है। अब इसको ये लीनियर इक्वेशन के थ्रू भी हम करते हैं, ये लीनियर इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0.06 वेरिएबल एक्सपेंस है हमारा पर यूनिट कॉस्ट है, और जबकि x हमारी नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। ठीक,
एक्स हमारी यहाँ पर सॉरी डॉलर अमाउंट है और यहाँ पर ये 80,000 हमारे पास डॉलर है। बिल्कुल उसी तरह का प्रोसीजर है जो हमने वहाँ पर अडॉप्ट किया था कि हम एक्स को कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने का मुराद ये है कि इस एक्स को दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो एक्स माइनस 0.60 एक्स, तो हम एक्स को कॉमन ले लें तो हमारे पास 40 आएगा जो कि 40% है, जो कि हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो में कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक, तो इससे भी हमारे पास सिमिलर एग्जांपल जो हमने प्रैक्टिस की इससे भी वही आया, यानी हम 40% कैलकुलेट करें या इन अमाउंट करें। आप उसी एग्जांपल को जो मैंने आपके साथ डिस्कस की ऊपर देखें तो आपके पास यही अमाउंट आएगी जो यहाँ पर हमने ऊपर डिस्कशन की। हम अमाउंट में देखें दिस वन, हम 400 देखें तो हमारे पास $200 सेल $200,000 सेल हो रही है 400 यूनिट, और हम अगर इसकी कंट्रीब्यूशन रेशो में देखेंगे तो हमारे पास 40% आएगा। तो हम दोनों सूरतों में हमारे पास, अगर हम अमाउंट में देखेंगे तो हमारे पास $2,000 आएगा, $2,00,000 आएगा, और अगर हम यूनिट्स में देखेंगे तो 400 यूनिट्स में आएगा। दोनों सूरतों में वो इक्वेशन आपको सिमिलर रिजल्ट देगी जो हमने यहाँ पर कैलकुलेशन की। देखें यहाँ पर $2,000। फिर इसके बाद दूसरा जो तरीकेकार है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो है, जो कि अभी आपने एक केस किया भी, केस स्टडी की, और जिसमें हमारी फिक्स एक्सपेंस डिवाइड बाय ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट सेल। इस को मद्देनजर रखें, इस फार्मूले को ज़हन नशीन करें कि हमारी टोटल एक्सपेंस हम नहीं कर रहे, हम फिक्स एक्सपेंस ले रहे हैं, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट हम कंसिडर कर रहे हैं, या हम डॉलर सेल में देख रहे हैं फिक्स एक्सपेंस को डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। क्योंकि हम अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन को लें या हम फिक्स एक्सपेंस को लें, दोनों सूरतों में हमारे पास जो है ब्रेक इवन 0 पॉइंट पर आएगा। ठीक, तो ये फार्मूला भी आप अपने ध्यान में रखें जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसको भी हमारे अंडर कंसिडरेशन। यानी हमारे पास दो हो गए, एक हो गया कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइड बाय टोटल सेल, और दूसरा हो गया हमारे पास फिक्स एक्सपेंस डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन। दोनों सूरतों में मैं इसको इस तरह बताता हूं यहाँ पर इस एग्जांपल में कि मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था कि हम फिक्स एक्सपेंस को लें, फिक्स एक्सपेंस डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन करें तो ब्रेक इवन आ रहा है, या हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइड बाय टोटल सेल करें ये 250, तो फिर भी हमारे पास ब्रेक इवन। दोनों सूरतों में हमारे पास ब्रेक इवन आ रहा है। दो एग्जांपल्स हमारे सामने इसकी आ रही हैं। तो ये दो एग्जांपल हमारे पास हमने डिस्कस की। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, ये आपने शाबाश इसको मुझे बताना है ये कि इसका आंसर क्या आता है, फिर हम इस डिस्कशन को वाइंड अप करेंगे और फिर वो प्रेजेंटेशन देंगे। शाबाश। Coffee Planet is an espresso stand in a downtown office building. The average selling price of a cup of coffee is 1.49, वही है और जो हमने प्रीवियस एग्जांपल की थी। And the average variable expense per cup is 0.36 और एवरेज फिक्स एक्सपेंस जो है वो $13,000 है। 2100 कप सोल्ड हुए हैं ऑन ईच मंथ। आपने बताने हैं यूनिट्स में, बताने के कितने कप्स जो हैं वो इन्होंने सेल किए हैं ब्रेक इवन के लिए, यानी ब्रेक इवन कितना कप्स तक हो जाएगा हम सेल करें तो हमारा ब्रेक इवन होगा। पूरे महीने में 2100 कप सेल हुए। अब इसमें से ये इसका हमें प्रॉफिट भी जनरेट हुआ है, लेकिन कितने कप हम सेल करेंगे कि हमारे पास ब्रेक इवन तक पहुंचे? शाबाश, मुझे कैलकुलेट करके बताएं क्या तरीकेकार होगा। एनीवन अमंग यू, फॉर्मूला क्या होगा? अभी हमने डिस्कस किया था। फॉर्मूला क्या होगा बता भी दिया। Sir, fixed expense plus target profit divided by contribution margin. देखिए प्रॉफिट तो हमारे पास यहाँ पर 0 होना चाहिए ना ब्रेक इवन के लिए, तो फिक्स एक्सपेंस डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कंट्रीब्यूशन 1150 कप्स। शाबाश, ये फिक्स एक्सपेंस हमारा ये रिमेन फिक्स है यहाँ पर 1300 डॉलर्स हमारे पास फिक्स एक्सपेंस है, और डिवाइड बाय हमने कहा कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन यूनिट पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है? सेलिंग प्राइस 1.49 माइनस वेरिएबल एक्सपेंस 0.36,
इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, वो इस पर डिवाइड करेंगे 1300 यूनिट पर, तो हमारे पास आएगा 1150 कप्स आएंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स आएंगे। अंडरस्टैंड? तो ये हमारी आज की डिस्कशन थी। अगर कोई चीज आपके जहन में हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं है? No, sir. अच्छा चलें, अब हम हमारे जो एज पर ओवर प्लान हमने जो डिस्कस किया था कि हम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर डिस्कशन हमारे जो कोर्स पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पर वो प्रेजेंट करेंगे। तो मैं इनवाइट करूँगा मिस्टर अब्दुल्ला एंड मिस फातिमा, फजर, सॉरी फातिमा नहीं, कि वो कैरी ऑन करें और जो प्रेजेंटेशन उन्होंने देनी है स्किल के हवाले से वो शेयर करें। शाबाश। सर मैं स्लाइड शेयर। जी जी शेयर करें आप। आपको वो देना पड़ेगा ना, एक मिनट। नाउ यू आर द होस्ट। तो अब्दुल्ला शाहिद होस्ट हैं और वो ही आगे कैरी ऑन करेंगे, शेयर करेंगे अपनी स्लाइड। अब्दुल्ला आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। हाँ हो रही है। स्टार्ट करें। जी जी करें, बिस्मिल्लाह करें। All right, starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Today, I, Abdullah Shahid Khan, and my classmate Fajr Khan will be presenting a brief overview on how to deliver an effective presentation. Here's the presentation outline. I will start off with introduction, planning your presentation, the presentation sequence, and then Fajr will present creating effective visual aids and effective presentation techniques. Introduction. Here, I would like to start with saying that great speakers aren't born, they are trained. It basically means that presenting something is a skill that can be developed through training and experience. So why you should give a presentation? Well, it has three main purposes. To inform, that is basically help your audience members to acquire information that they do not already possess. Number two, to persuade, and number three, to educate your audience member. Well, mentioned here are some definitions. Presentation is something you set forth to an audience for the attention of the mind, and effective means producing a desired result. All right, to give an effective presentation, you have to overcome your fear. So what does a fear look like during a presentation? Well, it can be shaky hands, blushing cheeks, memory loss, nausea, knocking knees, etc. So you have to be normal while presenting. Here are some of the causes of anxiety. Number one, fear of unknown or loss of control. Number two, fight or flight mode, no backup plan, no enthusiasm for subject, focus of attention. So in order to give an effective presentation, then first of all, you have to control your anxiety. Don't fight it. You have to be audience centered, accomplish objective, fun for audience, fun for you, conduct within time frame. Planning your presentation. Number one, you have to determine the purpose of your presentation and ask yourself, what do you want to accomplish while presenting?
Number two, you should know your audience. Your success depends on your ability to reach your audience. You should know the size of your audience, what are their demographics, what their knowledge level, motivation, why are they attending, and finally, what do they expect from you? Number three, you should always plan about the space in which you are going to present. It should be in a way that it doesn't distracts you. Following are some of the factors that you should look after in your presentation space in order to avoid distractions, like number of attendees and seats, seating arrangement, lighting and lighting controls, audio and visual equipment, distractors. And number four, so what day and time you should choose for your presentation? Well, it can be in the morning, afternoon, evening, workday versus weekend. In short, it can be any day. Number five, organizing your presentation. First, you have to determine the main points. Collect the evidence that supports your information, transitions, prepare an outline, prepare a storyboard. Number six, the most important, rehearse again and again. Work to a script and time your presentation, practice question and answers, practice in the actual room if possible, check equipment, load your slides in advance. The presentation sequence. Number one, building relationship. Well, firstly, audience members need to trust you and should feel that you care about them. So in order to build a good relationship, you need to start before you begin, like learn their names, or opportunity to reinforce or correct audience assessment, make a good first impression. Remember, people always listen to the people they like. Number two, opening your presentation. Always introduce yourself first and let them know why should they listen to you. Get their attention, build more rapport, introduce the topic you are going to present. Your humor matters a lot. Come up with a short story, make your audience think, invite participation of your audience, and get your audience's response. Number three, presenting main points. Make point-to-point transitions. Your point should have a supporting evidence, include examples with each important point. Try to pay attention to your audience while presenting. Are they listening or not? And make sure that you make your audience involved by taking feedback and questions from them. Number four, concluding your presentation. Before concluding, you should inform your audience that you are about to close. Quickly summarize all the main points that you have already presented. Take a feedback and answer the questions of your audience. Now, Fajr will present creating effective visual aids. Assalamu alaikum everyone. My name is Fajr Khan. Just like Abdullah just told, I'll be carrying on from here. Creating effective visual aids. And to create, next slide. To create effective visual aids, you can design good slides. And for that, you need to focus on four main things, which are one, content. You need to understand the purpose of it. Try to stick to the main issue by avoiding any irrelevant information. If it doesn't add value, don't use it. Proper and brief introduction. Don't drag it, or else you'll bore your audience. Number three, color. Use color to attract them, to keep them engaged in your message. Number four, subliminal messages. Next slide. What is visual aids? Basically, it's something used to illustrate information, things that need to be remembered, identify, or something you need to clarify, a point or anything. For example, slides in this case, our presentation slides are visual aids for you. It's helping you to understand what we are here to tell you or inform you. And as we know, we are able to remember 50% more if we are hearing as well as seeing something. Next slide. Although, as we know, they do help us with understanding and lasting impact, but if used improperly or poorly, they can become distraction. For example, if I'm explaining something while in my slide, I got some random emoji, J for pictures or text or anything which is distracting you.
obviously you'll switch your attention or focus from my presentation to the slides, or to the things happening in the background. Hence, you need to make sure that you use them in a certain way that it doesn't really distract your audience. You are able to grab their attention for a longer period of time, and it doesn't sidetrack. And next slide. These are the examples of visual aids PowerPoint which we are using in our presentation: graph charts, pictures, film charts, sketches, anything which help the audience to see your message. Next. Now, when you're making these visual aids like presentation here, how can you make sure they're effective? That's the key point. If you want them to understand your point, as well as, listen and want them to absorb your message, you need to make sure that your visual aids are effective. Here are a few things which I'm going to list out, which will help you to do that. First, outline points. Try to meet the needs of your audience, and while doing that, be clear and precise. Try not to drag your message, and don't dominate them, or else they'll be defensive. Their mindset will be defensive towards your information or idea. Next. Make sure your font is easily understandable. Use heading just like we are using, and we are bolding information which we think is important or which we want our audience or you guys to understand. Next. Okay, as just like I told you earlier, we need to use colors and everything so that our visual aids or presentation are more catchier, attractive. But ensure that the colors you use them wisely. There's always this red and blue conflict. If you're using red letters on blue background, as you can see here, there's like a vibrant effect. Same goes with blue on red. So make sure you use colors which are easily, captured by the audience. Next. Here are some other example. The text is not quite visible. You're not able to read it. You're not able to understand it. So make sure you go with the color scheme, which is quite clear. Next. Okay, what is fly in versus vibe? I know you guys must be confused. What am I talking about? It's the way slides comes in. If you're using a fly in or vibe, which one you should go for. Whatever you choose, just try to make certain that you are consistent with it. And it's not that distracting with less eye movement. Make sure if you're using something, it stays throughout your presentation. You don't want your audience to get distracted, or, there's like a rapid movement. You don't want that, or else it will make them, it will annoy them, and it will be hard for them to understand your message. Next. Effective presentation technique. For presentation to be effective, there are a few techniques which you need to figure out, which you need to work on, which I'm gonna list out in the other side. To be an effective speaker, you need to use verbal, non-verbal, and paraverbal in your presentation. Not just use it, you need to be good at it with needed information. And by verbal, I mean the words we choose. You need to understand that the need of your audience depends upon the word you are choosing. So try to choose them wisely. Avoid judgy, offensive words, or else your audience won't be open to the information or message you are here to provide. They'll become defensive. There will be a barrier between them. They'll rather not listen to your opinion. They'll be like, if this person is not open to my opinion, my feedback, or my answers, why should I listen or stay longer in this presentation? So make sure you use words which are easily understandable. Let me give you an example of it. If I'm explaining something and I decide to choose a word, like if there's a fact which I believe in, and I present it with using words like, obviously it is like that. Obviously the person is like that. If I'm using it like that, my audience will become reluctant to the message. They'll be like, this speaker had already made up their own mind, so there's no point of feedback or interaction or question and answer. So hence you can either go for a sentence like, maybe it is like that. You can either do like that, try to be more open to their idea too. And use your body language, hand gesture. Right now our presentation is online, so we are not able to do that, but
with our body language, eye contact, our presentation become so much effective. You have no idea. It grabs their attention. It makes them feel like you are here to understand. Audience become well aware of what you are about to say. They engage in your message. Next slide. Okay. Now in the following slide, they're just highlighting the paraverbal type of communication, which include loud, your voice. Make sure you're loud enough for the people at the back to understand you too. And make sure you're controlling your pitch, emphasizing on words which you think is important and which you want your audience to remember for longer period of time. And try not to finish in one go and just ramble. Don't do that. Hold it, pause for a moment so that your audience can process and comprehend what has been delivered, because you're not here to present and go. You're here for them to understand the message, understand the meaning behind it, assign meaning to it. Remember, what you say and how you say it is the key to an effective presentation. Next. Okay, there's one thing which yeah, this is something which I said earlier, but I'm going to add another point, which is assertive. When you're giving presentation, make sure you have an assertive attitude, because when the speaker is confident, it wins the confidence of their audience too. They believe and support your idea. Next. Okay, there's one thing which I think we all will agree with is speaker reading slides. It's like when speaker reads the slide, instead of presenting them, explaining them, trust me, it's the most annoying bit of it. Audience ain't illiterate, they can read as well. Don't insult them. Do you see me reading anything directly from the slide? No, right? Hence, try to avoid it. If you want to add value to your message or value to your presentation, try to present it in a way that audience are well aware of the fact that even you are well aware of this message. You know what you're saying. You know, you've done research about it. You're not just reading from the slides. That's all. Next. Lastly, have good knowledge about your subject. Practice what you're going to present again and again. Even after that, if you forget a point, don't panic. As you know, and because of anxiety, we tend to do that. Just like Abdullah said earlier, if we are presenting something and we miss out a point, we panic, which lead to a disaster. So don't do that. Even if you do that, just remember that the audience won't know that you missed out something until you show it. We prepared it. Only I know the points which I'm about to say. So if I miss out something, you guys will never know. So that's something for you to keep that in mind. Just go with the flow and be confident. That's all. And the last one. Now, you might usually encounter a situation where the audience is attentive and focused at the start of the presentation, but they might lose their interest. Then at the end, they might, show interest too. Why is it? Because it's not easy for, if you, when, there are presentations which are hours long, and it's not easy for the speaker to keep each and every person engaged in their message throughout the presentation. But the least you can do is try, and for that you can overcome it by ensuring that you are making effective slides, just like we discussed earlier. And wait for feedback. Try to get feedback from your audience, because when you go for the feedback, it makes the audience aware of the fact that you are interacting with them. So go for the feedback, ask them question. And to conclude it all, I just want to say that don't be afraid, and remember to treat it like a conversation. It's not a performance. We are not here to perform something. We are interacting. It's a conversation. That's all. Thank you. Okay, well done, excellent. Both Mr. Abdullah and Miss Fajr, you have done a wonderful job. आपने बहुत ज़बरदस्त present किया है. And believe me, मेरे जो previous groups थे, तो इसमें आप की presentations जो हैं बहुत outstanding थी. Well done. I appreciate you. मुझे इस पर खुशी है कि मैंने right person को select किया. ये presentation जो थी, ये role model है, road map है, role model है for all students. They will follow the directions, they will follow the
मटेरियल जो कुछ यहाँ पर बताया गया है, स्पेशली यहाँ पर जो शेयर किया गया था, स्पेशली जो मैं वो कुछ स्लाइड्स थी वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि जो आपने जब अपना प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें आप वो स्लाइड्स जो हैं रिमेन करेंगे। अच्छा, यहाँ पर अब्दुल्ला ये रिक्लेम हुआ है? अच्छा, हो गया, ठीक है, सर मैं आपको बना देता हूँ सर। ठीक है, हो गया। तो इसमें मैं अभी आपके साथ शेयर करूं दूसरी एक स्लाइड, ये जो इन्होंने प्रेजेंट किया है ना, तो ये मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें आपने मैं क्यों ये आपके साथ मैंने ये शुरू दिन में रखा, इसकी वजह ये थी कि जो इसका बेसिक पर्पस है कि आप जब प्रेजेंटेशन देंगे, अपनी प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन देंगे, जो मेजर प्रेजेंटेशन होगी, तो उस प्रेजेंटेशन में आपने ये पॉइंट्स अपने जहन में रखना है। आपने जब प्रेजेंटेशन बनानी है, तो मेरे लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ, ये प्रॉब्लम हुई, स्टूडेंट्स ने फेस की कि मैंने उनको जो इंस्ट्रक्शन दी थी, जो बताया था, उन्होंने प्रेजेंट उस तरह नहीं किया, बस उन्होंने अपनी मर्जी से प्रेजेंटेशन किया, जो कि मतलब मकसद ये था, आपको बताने का मकसद ये था कि आप जो हैं सॉरी, आप एक फॉर्मल तरीके से, एक टेक्निकल तरीके से आप इस चीज़ों को लर्न करें और इसमें आपकी टेक्निकल एक्सपर्टीज बढ़े, और आप जब प्रेजेंट करें तो एक पता लगे कि फॉर्मल प्रेजेंटेशन है, और इसमें गलतियां ना हो नेक्स्ट टाइम आपको भी। अक्सर औकात मैंने देखा है, हर लेवल पर देखा है कि जब लोग प्रेजेंटेशंस देते हैं, अपने थीसिस की आप प्रेजेंटेशन देंगे, आप किधर जॉब के लिए जाएंगे तो आप प्रेजेंटेशन देंगे। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मेरी जो लाइफ एक्सपीरियंस है मैं उसका एग्जांपल दूंगा। जब मैं आपकी तरह स्टूडेंट था और जब फिर मैं प्रोफेशनल लाइफ में आ रहा था, तो मेरा एक्सपीरियंस हुआ, मैं यूफोन में इंटरव्यू के लिए उन्होंने मुझे बुलाया था। यूफोन में इंटरव्यू के लिए बुलाया, उन्होंने मुझे कहा कि आप उसी वक्त ऑन स्पॉट, उन्होंने मुझे कहा कि आपने प्रेजेंटेशन देनी है, और प्रेजेंटेशन आपने अपनी 5 स्लाइड्स बनाकर उसमें प्रेजेंट करना है, अपनी सीवी उसमें डालनी है और उसको बताना है, और एक एरिया दिया था, एक टॉपिक दिया था, उसको प्रेजेंट करना है। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जब वो प्रेजेंटेशन के लिए मैं आया, तो मेरे लिए, क्योंकि एक बड़ा हॉल था, जिस तरह आप देखते हैं एक कन्वोकेशन हॉल या जो अक्सर हमारा सेरेमोनियल हॉल होता है, इस तरह का हॉल था, और उसमें सारे पार्टिसिपेंट बैठे हुए थे जितने भी थे, और उनके एम्प्लॉयज़ भी थे, और मुझे उसमें प्रेजेंट करना। तो उसमें ये देखना ये चाह रहे थे कि इस बंदे के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, इसकी मोटिवेशन लेवल कितना है, ये इसको प्रेजेंट करने की, जो प्रेजेंटेशन बनाना और उसको आगे डिलीवर करना, ये किस तरह, एक टाइम फ्रेम देते हैं, टाइम दिया था उसमें, और वो डिलीवर करना था। तो कहने का मकसद ये है कि आपने, जब आपको कहा जाए कि भाई आपने ये प्रेजेंटेशन देनी है, तो आपने फिर उस वक्त कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनजर रखना है। आपने फॉर इंस्टेंस यहाँ पर मुझे प्रेजेंटेशन देनी है, जब आपकी मेजर प्रेजेंटेशन होगी, तो उसमें आपने कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनजर रखना होगा, ये पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बतानी है। तो स्पेसिफिकली जो खास तौर पर मैं जो आपकी डिस्कशन में देखना चाहूँगा, वो ये चीज़ होगी यहाँ पर, जो आई थिंक मिस फजर ने डिस्कस किए थी। ये नंबर 1, कंटेंट जो है ना, आपका प्रेजेंटेशन का जो कंटेंट है, क्या आपकी आप वहां पर कॉम्प्लीमेंट स्पीकर नहीं है, जिस तरह गेस्ट स्पीकर होते हैं, कि आपको बुलाए और आप जी आके प्रेजेंट कर रहे हैं। अब आपका प्रोजेक्ट है, ये आपका, ये इसके ऊपर मार्क्स डिपेंड करते हैं, तो आपने वहां पर कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं देना, आपने इन्फॉर्म करना है, इन्फॉर्मेशन देना है, एकेडमिक रिलेटेड है, ठीक है। तो ये चीज आपने आपने कोई टॉक नहीं करना। लास्ट टाइम हुआ इस तरह कि मैंने बिल्कुल मल्टीप्लाई बाय 0 कर दिया था, जो स्टूडेंट्स आए थे और वो ओवर एक्टिंग जिसे कह रहे थे ना, ओवर एक्टिंग कर रहे थे जी, वो देर शो द टॉकिंग बिहेवियर, ये कोई इसको कोई इवेंट समझ रहे, कोई फनी बना रहे, तो ये फन नहीं क्रिएट करना है, इसको आपने एक फॉर्मल तरीके से लेना है। स्लाइड्स आपने बनानी है, तो आपने जो स्लाइड्स हैं वो 5 to 10 लाइंस पर पेज होनी चाहिए, यानी उसको फुल ऑफ, जिस तरह भी